हाँ जी दोस्तों, लैके आ चुके हैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। हाँ जी मित्रों, इस करके वीडियो ਨੂੰ ਐਂਡ तक ध्यान ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਗॉड्स। There was a fight between the demons and the gods. The demons seemed to have an upper hand. It caused desperation to the gods. Second question है, what did Lord Vishnu advise to the gods to do? Lord Vishnu advised the gods to get a mighty sword prepared from the bones of some great sage. The next third question है, what was the sacrifice of Saint Dadichi? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਸੋ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਬੋਨਸ ਕੁਡ ਬੀ ਮੇਡ ਇਨਟੂ ਅ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਵੈਪਨ ਫॉर ਦ ਗॉड्स। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਿਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਯਾਜਨਾਸ ਪਰਫਾਰਮਡ ਇਨ ਆਰ ਹੋਮਸ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ, ਰਿਨੋਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਐਂਡ डिटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वट डज द ट्रेडिशन ऑफ फीडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रूव? It proves that the people of our country believe in the unity and sensitivity of all life. Next sixth question है, why did some scholars laugh at Ashtavakra? Ashtavakra had a deformed body. He looked very ugly. Therefore some scholars laughed at him. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। तो अगे सतवां क्वेश्चन, हाउ डिड अष्टावक्र रिएक्ट वैन सम स्कॉलर्स लाफ्ड एट हिम? हाउ डिड अष्टावक्र रिएक्ट? आंसर है अष्टावक्र बिकेम वेरी एंग्री। ही कॉल्ड दैम स्किनर्स बिकॉज दे मेजर्ड द वर्थ ऑफ अ परसन फ्रॉम द स्किन। तो अगे नैक्सट एट्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वट डिड विवेकानंद से टू द लेडी हु लाफ्ड एट हिज सिंपल ड्रेस? He said that it was the tailor who made man in the lady's country, but in his country it was the real worth and character of a person that mattered. Next ninth question है, what was the status of women in ancient India? In the ancient India, women enjoyed high status. No auspicious function was considered complete without their ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 10th, ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬਾਓ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦ ਵੂਮਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਬਰਾਊਟ ਟੂ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਵੂਮਨ। ਹੀ ਲੁੱਕਡ ਅਪॉन them ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਮਦਰਸ। that was why he called the woman mother and bowed his head before her. तो अगे नैक्सट 11th क्वेश्चन है, वाई अकॉर्डिंग टू यू वेयर द वार्स फाउट इन द महाभारता एंड रामायण स्केड? यह आंसर है, दीस वार्स वर फाउट टू डिफेंड एंड अपहोल्ड द होनर ऑफ मदरहुड। दैट वॉज बाई दे वर कंसिडर्ड सैक्रेड। इस तो अगे 12th क्वेश्चन है, वट डज लॉर्ड रामास मीटिंग with a beal woman and eating the tasted Bemis show? His answer है, it shows that in ancient India there was never any discrimination on the basis of caste, creed or profession. Next chapter का पहला क्वेश्चन है, who was Fatik? Fatik was a 14-year-old. He was the ringleader of among the boys of his village. His fertile mind always thought of new mischiefs. Next second question है, what was the new mischief Fatik thought of? There was a log lying on the bank of the river. He planned to roll the log away with the help of other boys. In this way he wanted to annoy owner and enjoy the fun. So okay, third question है important, why were Fatik and his friends annoyed with Makhan? Fatik and the other boys wanted to roll the log away, but Makhan came and sat down on the log. This annoyed Fatik and his friends. Next fourth question है, what was Fatik's new maneuver? Fatik asked his followers to roll the log with Makhan sitting over it. This he thought would give them added amusement. Next question है,
Fifth, why did Fatik beat Makhan even in the presence of his mother? Makhan lied to his mother that Fatik had beaten him. Fatik could not bear this. Fatik could not bear this. Therefore, he beat Makhan. तो गे सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डिड फटिक्स मदर वांट टू सेंड हिम अवे टू हर ब्रदर्स हाउस? द मदर हैड प्रेजुडाइस अगेंस्ट फटिक. शी थॉट ही वुड सम डे ड्रॉन मक्खन इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट. देयरफॉर शी वांटेड टू सेंड हिम अवे. नेक्स्ट सैवंथ क्वेश्चन हैगा, हाउ वॉज फटिक रिसीव्ड बाय हिज आंट? The aunt was not at all pleased. She thought of Tix as an unnecessary addition to her family. Next, eighth question है, why could not Fatik do well at school? और या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता, how did Fatik fare at his new school in Kolkata? इसका आंसर रहेगा, Fatik was ill treated at his uncle's house. He was always sad. He could not put his mind to his studies. Naturally, he could not do well at school. Next, ninth question है, why did Shamar send for his sister? Fatik was seriously ill. The doctor said that the boy's condition was critical. That was why Bishamar sent for his sister. Next, 10th question है, what were Fatik's last words? Fatik's last words were, mother, the holidays have come. तो गे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ द अर्थ विचों वट आर प्लैनेट्स? अ बॉडी दैट गोज अराउंड अ स्टार इज कॉल्ड प्लैनेट. फॉर एग्जाम्पल, द सन इज स्टार एंड द अर्थ गोज अराउंड इट. दस द अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ द सन. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन. It includes the sun, its planets and the satellites of these planets. Next, third question है, how can you distinguish between planets and stars? बिल्कुल आसान ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Stars twinkle while planets do not. This is the real way to distinguish between planets and stars. Fourth question है, why do the stars twinkle? The stars, like the sun, are the ball of fire. As their rays pass through the different layers of the atmosphere, they seem to be twinkling. तो अगे फिफ्थ क्वेश्चन है, how was the earth formed? The earth shot out from the sun in the beginning. It was very hot. It took millions of years to cool down. Sixth question है, why does the moon look bigger than the stars? The moon looks bigger than the stars because it is quite near to the earth. तो अगे नैक्सट चैप्टर विच पहला क्वेश्चन हैगा, वाई वॉज द स्टाउट लेडी वॉकिंग डाउन ऑन द मिडल ऑफ द रोड? शी थॉट शी हैड लिबर्टी टू वॉक वेयर एवर शी लाइकड. शी सैड नाउ दे हैड गॉट लिबर्टी. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द स्टाउट लेडी मिस्टेकन अबाउट लिबर्टी? शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट इफ एवरी मैन वर फ्री टू डू वट ही लाइकड देयर वुड बी नो फ्रीडम टू ऑल. देयर वुड बी चॉइस एवरीवेयर. तो कि थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पुलिसमैन एज एट पिकाडली सर्कस सिंबलाइज? ही सिंबलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ लिबर्टी. ही पुट्स अ लिटिल चेक ऑन आवर पर्सनल लिबर्टी सो दैट देयर इज अ सोशल लिबर्टी. फोर्थ क्वेश्चन है, कैन वी डू वट एवर वी फील लाइक डूइंग? लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर. It is a social contract, so we cannot be free to do whatever we like to do. Next, fifth question है, what was the writer reading during the journey? He was reading a blue book. Sixth question है, why did the writer need a reasonable silence in the compartment? The writer was not reading the book for pleasure. He was reading it for the serious purpose. That was why he needed a reasonable silence. Seventh question है, who disturbed the other on the train? Two passengers boarded the train. One of them kept talking loudly. The other could not concentrate on the book he was reading. Next, eighth question है, what was the intruding passenger talking of? He was not talking any particular thing. He was talking of any and every subject under the sun.
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵੈਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 100% ਪੱਕਾ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਟਰਮ 2 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।